हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लिननेस इज एसोसिएटेड विद। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो लिननेस साइंटिस्ट है वो किससे एसोसिएटेड थे। तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे फर्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड डी लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इट इज द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहा जाता है, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो बेसिकली इन बायोलॉजी क्या होता है, बेसिकली एक कॉमन सिस्टम जो होता है नेमिंग का वो असेंशियल होता है, सो दैट कि हम जो पर्टिकुलर नेम है उसको वाइडली एक्सेप्टेड बना सके थ्रू आउट द वर्ल्ड। And therefore एक system evolved हुआ, system of naming was evolved, that is binomial nomenclature. Binomial nomenclature was proposed by scientist Carolus Linnaeus. It was proposed by scientist Carolus Linnaeus साइंटिस्ट। तो हम जो है ये जो सिस्टम था लाइक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर सिस्टम था, इसमें कुछ रूल्स थे विच वी हैव टू डिस्कस हियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम क्या था कि जो ईच ऑर्गेनिज्म है, ईच ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय टू नेम्स। ईच ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय टू नेम्स। फर्स्ट इज जीनस, एंड सेकेंड वन इज स्पीशीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट उन्होंने कहा था लाइक जो जीनस नेम होता है इट शुड ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, begin with capital letter, while जो species name है it should begin with small letter, small letter. Next thing about binomial nomenclature is कि जो scientific name थे, like the scientific names are always italicized, and next is जब if they are handwritten, when handwritten, तो जो जीनस एंड स्पीशीज नेम है उनको अंडरलाइन करना होता है। जीनस एंड स्पीशीज नेम होता है, इट शुड बी अंडरलाइंड। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं लाइक साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमो सेपियंस। तो होमो विल बी जीनस एंड सेपियंस विल बी द स्पीशीज। एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो जीनस नेम होता है, वो बिगिन होता है विद कैपिटल लेटर्स लाइक एच फ्रॉम होमो, एंड जो सेपियंस होता है इट बिगिंस विद द स्मॉल लेटर्स लाइक एस इन दी सेपियंस। तो ये होगा जीनस नेम एंड इट इज द स्पीशीज नेम। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं सारे। फर्स्ट गिवन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो hypothesis थी, it was proposed by a French naturalist, that is Jean Baptiste Lamarck. Jean Baptiste Lamarck. Jean Baptiste Lamarck proposed the hypothesis of inheritance of acquired character. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्वायर होते हैं ओवर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वो ट्रांसमिट होते हैं टू दी ऑफस्प्रिंग, एंड ये कॉमनली रेफर किया था एज अ थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस which are acquired in the lifetime वो ट्रांसफर होते थे, ट्रांसमिट होते थे टू दी ऑफस्प्रिंग according to this hypothesis. This option is incorrect as Linnaeus is not associated with this.
B given a binomial nomenclature. As we discussed, binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus. So yes, this is the correct answer. C given a law of independent assortment. So law of independent assortment was given by Gregor Mendel in 1865 in 1865 during his studies of genetics. जब वो genetics की study कर रहे थे pea plant पे, तो तब this law was given by Gregor Mendel. तो ये option भी incorrect है as this was not given by scientist Linnaeus. And D given a law of limiting factors. तो law of limiting factors के बारे में हम discuss करें. Law of limiting factors. So the law of limiting factors was proposed by scientist Frederick Frost Blackman. Frederick Frost Blackman proposed this, and जो Blackman जो proposed किया था law in the year 1905, and according to which उन्होंने क्या बताया था कि जो chemical process होता है depend होता है multiple factors पे. the rate of process जो होगी वो limited होगी by the pace of the slowest factor or limited factor. So this was not given by Linnaeus. Linnaeus is not associated by law of limiting factors. That's why it's also incorrect. Correct answer हो जाएगा B, binomial nomenclature. Answer is B, binomial nomenclature. I hope you understood it well. Best of luck.